As always, I'm back with our daily current affairs session. So today also we have some important news with us, followed by some important questions. So without any delay, let's just begin our today's news session. So the first news today that we have is that the Parliamentary Standing Committee on Law and Justice has recommended substantial changes in mediation bill. So what is the mediation bill? इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं जैसे दो लोगों के बीच कोई dispute हुआ है and instead of going to court directly, वो dispute को कोर्ट के बाहर ही किसी मीडिएटर के थ्रू उसको थ्रू अ प्रोसीजर उसको मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज व्हाट दिस बिल इज रिलेटेड. ठीक है, तो इसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डिटेल्ड एनालिसिस. इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो मीडिएशन बिल है उसके. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो मीडिएशन बिल है 2021, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. इट इज अ वॉलंटरीली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस. सो ये वॉलंटियर है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है ये. Formal, confidential, flexible, and non-binding process in which an impartial person called a mediator helps the parties to understand the interests of everyone involved and their practical and legal choices. So क्या बोल रहे हैं ये? कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये समझ लीजिए कि इनफॉर्मल है. ऑब्वियसली बिकॉज यू आर नॉट going to court or anywhere जहाँ पे की जो लीगल डिस्प्यूट फॉर्मली सॉल्व होते हैं, तो ये इनलीगल है, कॉन्फिडेंशियल है और फ्लेक्सिबल है. अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टीज इट कैन चेंज. और नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, मतलब वॉलंटियर है. जैसे बताया कि वॉलंटियरली इफ यू वांट टू डू दिस देन यू कैन डू. तो इसमें क्या होता है कि मीडिएटर होता है जो कि इम्पार्शियल होता है. मतलब इम्पार्शियल होगा, जो दोनों में से किसी पार्टी की भी साइड नहीं लेगा. वो सिर्फ बात सुन के, दोनों के इंटरेस्ट को सुन के, जो भी एविडेंसेस वगैरह है उनको सोच के देन दे विल डिसाइड कि एक्चुअली क्या होना है. ठीक है, सो दैट here the role of mediator is very important. The bill requires persons to try to settle civil or commercial disputes through mediation before approaching any court or tribunal. So ये जो बिल है ये बात करता है कि जितने भी सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो मीडिएशन के थ्रू ही लोग सॉल्व कर ले, कोर्ट या ट्रिब्यूनल जाने की आवश्यकता ना पड़े. ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट, इस लाइन में इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मीडिएशन बिल है ये बात करता है कि क्रिमिनल जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है. उसके लिए दे हैव टू गो टू कोर्ट ओनली. सिविल एंड कमर्शियल के लिए ही सिर्फ ये है. Agreements resulting from mediation which will be binding and enforced in the same manner as court judgments. So जो भी final agreement आएगा, जो भी decision होगा, वो मिलके हम लोगों को बस उतना ही important, उतना ही binding होगा, उतना ही enforce होगा जितना कि कोई भी कोर्ट का जजमेंट होगा. तो भले ही ये वॉलंटरीली एक वॉलंटियर प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल इनफॉर्मल प्रोसेस है, बट जो भी जजमेंट आएगा, जो भी एग्रीमेंट आएगा, वो कोर्ट के जजमेंट के बराबर ही उसको फॉलो किया जाए. नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल? उसके बहुत सारे की फीचर्स हैं जो कि पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से. व्हेन यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स, दे आर important from that perspective. So let's just read and understand. Pre-litigation mediation. Pre-litigation mediation क्या होता है समझते हैं.
Parties must attempt to settle civil or commercial disputes by mediation before approaching any court or certain tribunal. तो ये हमने देखा कि पार्टीज जो भी हैं वो सेटल करने की कोशिश करेंगी डिस्प्यूट्स कोर्ट में जाने से पहले. Even if they fail to reach a settlement through pre-litigation mediation, the court or tribunal may at any stage refer the parties to mediation if they request for the same. So, अगर ऐसा होता है कि settlement नहीं हो पा रहा है, so then they can, the parties, they can go to the court and they can refer this, suppose, for example, if there is a case which is being done by these mediation and this did not happen actually, and when did not happen, uska koi result nahi aaya, then they can reach to the court, and in that process then the court or the tribunal can ask these people or these parties to refer to these mediation again at any stage. So this is what we meant by pre-litigation mediation. Okay. Okay. So the next feature is disputes not fit for mediation. So देखते हैं क्या है. The bill contains a list of disputes which are not fit for mediation. So there are some categories जिसमें कि mediation can be taken, can be referred, but there are some cases in which it cannot be taken. So what are those cases? Let's just try and understand. These include disputes relating to claims against minors or persons of unsound mind. So कोई ऐसा claim है जिसमें कि कोई minor involved है, one of the parties में से कोई minor involved है, छोटे एज का इंसान, and कोई ऐसा इंसान involved है जिसकी age, जिसकी जो mind की condition है वो mentally he is not stable or she is not stable, तो वो लोग involved नहीं हो सकते. Involving criminal prosecution and affecting the rights of third party. So कोई ऐसा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कोई क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकता. कोई क्रिमिनल अगर सेटलमेंट है दैट कैन नॉट बी टेकन प्लेस इन मीडिएशन. ठीक है. Then affecting the rights of third party. दो लोग अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके डिस्प्यूट सॉल्व होने से कोई थर्ड पार्टी जो है वो इफेक्ट हो गई. That those cases will also not be taken. The central government may admit this list. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस लिस्ट को अमेंड कर सकती है कि कौन से डिस्प्यूट्स लिस्ट में रहेंगे एंड कौन से डिस्प्यूट्स लिस्ट में से हटाए जाएंगे. It will apply to mediations conducted in India involving one domestic party, involving at least one foreign party and relating to a commercial dispute. So, और कौन-कौन से इसमें अप्लाई हो सकते हैं, किन केसेस में मीडिएशन जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है कंट्री में. अगर कोई एक डोमेस्टिक पार्टी है, अगर कम से कम एक फॉरेन पार्टी है and related to कोई commercial dispute है, then also it can be done. That will be considered as international mediation. Now, what is this process? This is one of the features. Here's the process क्या? Okay. So mediation proceedings will be confidential and must be completed within 180 days. May be extended by 180 days by the parties. So ये जो confidentiality है वो बहुत important है, वो maintain रहनी चाहिए और 180 days के अंदर it must be completed. नहीं हो पाता तो extend किया जा सकता है by the parties. A party may withdraw from mediation after 2 sessions. अगर 2 parties हैं
वो अपना मीडिएशन का प्रोसेस फॉलो कर रही है. And after some time they feel it is of no use, we need to go to the court, or we need to have some other way of resolving the dispute. So फिर after 2 session they can withdraw. Okay. Court annexed mediation must be conducted as per the rules framed by the Supreme Court or High Court. So court का मानना है कि ये जो रूल्स है मीडिएशन के वो कैसे फ्रेम होंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब. नाउ हु इज अ मीडिएटर? मीडिएटर कौन होगा? दिस इज इम्पोर्टेंट. अब कोई एक बंदा ऐसा होगा जो पूरा उसका सोल एंड हार्ट होगा जो रिजॉल्व कराएगा केस, तो वो कैसा बंदा होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं. Mediators may be appointed by the parties by agreement or a mediation service provider. अब इसमें क्या, या तो दोनों पार्टी जो है वो मिलके एग्री कर ले कि चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पर्सन ए को अपना मीडिएटर ले लेते हैं, वो हमारा केस जो है रिजॉल्व करा दे, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो कि कोई इंस्टीट्यूशन है वो एडमिनिस्टर करता है मीडिएशन, तो ऐसे सर्विस ले ले किसी से. They must resolve any conflict of interest that may raise doubt on their independence. Not at all difficult. Parties may then choose to replace the mediator. So these parties have full right to choose and to replace the mediator. Parties पर ही depend करता है पूरी तरीके से. Now, Mediation Council of India. Let's try to understand this. The central government will establish the Mediation Council of India. Very important, याद रखना. कौन establish करेगा? Central government. The council will consist of a chairman. ये जो मैं चीजें अभी बता रही हूँ पूरा कैसे काउंसिल बनेगी, क्या क्या मेंबर्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. 2 full-time members with experience in mediation or ADR, 3 ex-officio members, including the law secretary and the expenditure secretary, and a part-time member from an industry body. तो कितने लोग होंगे? एक तो चेयरपर्सन हो गए, 2 फुल-टाइम मेंबर होंगे और 3 ex-officio होंगे. तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर होंगे टोटल, और 2 पार्ट टाइम भी होंगे. ठीक है. सॉरी, एक होगा, एक पार्ट टाइम भी होगा. So these will be the member. Functions of the council include registration of mediators and recognizing mediation service providers and mediation institute. अब इसका जो फंक्शन होगा, काउंसिल बना दी जाएगी, कुछ काम भी तो करेगी. नाउ व्हाट विल दे विल डू, वो मीडिएटर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे कि कौन कौन बंदा एक्चुअली रजिस्टर्ड है एंड कौन कौन मीडिएशन का काम कर सकता है. तो उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, देन ओनली दे कैन डू दिस वर्क, राइट. देन वो मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड मीडिएशन इंस्टीट्यूट को भी रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है. और ये जो इंस्टीट्यूट होंगे ये ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे और सर्टिफाई करेंगे मीडिएटर्स को. ठीक है. Then the 6th point is mediated settlement agreement. ये क्या होता है समझते हैं. Agreements resulting from mediation will be final, binding and enforceable in the same manner as court judgment. तो ये तो हम पहले ही देख सकते हैं कि जो भी एग्रीमेंट रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा मीडिएशन प्रोसेस के थ्रू, वो उतना ही फाइनल, उतना ही बाइंडिंग एंड उतना ही एनफोर्सेबल होगा जितना भी कोर्ट जजमेंट होता है. They may be challenged on ground of fraud, corruption, impersonation or relating to dispute not fit for mediation. और ऐसा नहीं है कि जो आ गया वो फाइनल है, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है इन सम केसेस, कि अगर उसको फ्रॉड या करप्शन या इम्पर्सनेशन
या डिस्प्यूट जो है वो फिट ही नहीं होता मीडिएशन के प्रोसेस में, तो फिर उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर इज कम्युनिटी मीडिएशन। दिस may be attempted to resolve dispute like to affect the peace and harmony amongst residents of a locality. So community mediation का कब यूज किया जा सकता है? जबकि कोई डिस्प्यूट हो रहा है जो कि एक लोकेलिटी की पीस या हार्मनी को इफेक्ट कर, तब कम्युनिटी मीडिएशन को यूज किया जा सकता है। इट विल बी कंडक्टेड बाय अ पैनल ऑफ 3 mediators. Okay, so it may include persons of standing in the community and representatives of the resident welfare association. Okay. Oh, great. Yes. Now we have seen entire features of this bill. Now let's try to understand issues highlighted by the Parliamentary Committee, जो कि actually news है कि क्या क्या इसमें उनको इस बिल में पार्लियामेंट्री कमेटी को क्या क्या इश्यूज दिख रहे हैं जिसके लिए दे आर अपोजिंग। कंपल्शन, द पैनल cautioned against making compulsory pre-litigation mediation. So they are saying कि compulsion this can be a problem. Then scope for delay, making pre-litigation mediation mandatory may actually result in delaying the case. तो अगर हम प्री लिटिगेशन मीडिएशन कर देंगे कि आपको पहले करके पहले ऐसे ही रिजॉल्व करके केस देखना पड़ेगा मीडिएशन के थ्रू, एंड यू उसके बाद ही अगर कुछ चैलेंज है देन यू विल ओनली गो टू गेट तो कोर्ट, देन ये जो है डिले की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जुडिशियल इंटरवेंशन, द प्रोविजन टू गिव हायर कोर्ट द पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर मीडिएशन वाज आल्सो क्वेश्चन्ड। So ये जो रूल्स हैं, जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, ये कहीं ना कहीं दिस कैन बी क्वेश्चन बिकॉज हायर कोर्ट जो है दे आर the rules are actually going to be made according to their rules, so that is also questioned by them. Narrower scope, the members question the non-applicability of the provisions to non-commercially disputes involved in the government and its agency. So it has actually a very narrow scope according to them. No bar for experienced professionals. So actually in this they are trying to say कि प्रोफेशनल एक प्रोफेशन ऑफ मीडिएटर्स एक होना चाहिए, and because of this they may not be having these people may not be having a lot of experience, they may not be having good practices, so वो सब चाहिए जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उनको ऐसे प्रोफेशनल मीडिएटर्स लाने चाहिए, so that will be a प्रॉब्लम कि उसके लिए कोई एक एग्जैक्ट एक लेवल और एक एडिकेट एक्सपीरियंस की कोई ऐसी अभी तक बात नहीं। प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंटर, द काउंसिल रिक्वायर्स prior approval from the central government before issuing regulations related to its essential function. It is not clear why such prior approval is required. Now they are saying कि जो काउंसिल है उसको क्यों, जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको क्यों प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर देम। जो उसके एसेंशियल फीचर्स हैं वो तो जो उसके एसेंशियल वर्क्स हैं फंक्शंस हैं दे कैन डू इट ऑन देयर ओन, why do they need such approval from central government? This is also a question. Domestic conduct of mediation. The bill applies to international mediations only if they are conducted in India and not outside. So this is also a question. कि अगर इंडिया में ही हुआ है तभी it can apply, otherwise it cannot apply. Okay. Then why need a law on mediation? Why is there actually requirement कि एक mediation पे we need to have a law? ऐसा क्या जरूरत है? Why? Because past.
because the amount of time necessary for the parties and therefore the mediators to organize for the mediation is significantly way less as that need for trial and arbitration. A mediation of dispute can occur relatively early. So ये जो है ये फास्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि कोर्ट में ट्रायल होगा, हियरिंग होगी, all these things take a lot of time, and when it comes to mediation, it can be done quickly. Okay, so it will be very fast. Wait, give me a second. Yeah. Then flexible. There exists no set formula for mediation. Different mediators employ different styles. Procedures are often modified to satisfy the requirement of a specific party. So what they are saying कि जो formula है, there is no specific formula, बहुत ही flexible process है. जो parties हैं उनकी need के according, उनके interest के according, things can be molded. Cost effective, because mediation generally requires less preparation, is very less formal than trial or arbitration, and may occur at an early stage of the dispute. So इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है, इजीली स्टार्ट किया जा सकता है, शुरू में ही स्टार्ट किया जा सकता है, और लेस प्रिपरेशन चाहिए, इसलिए इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है. ब्रिंग्स पार्टीज टुगेदर. Parties can save and sometimes rebuild their relationships, like during a family dispute or commercial dispute. So parties जो हैं वो हो सकता है they might rebuild the relationship again, and अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है ये सब है तो इनको छोटे तौर पे अपने मिल के साथ में मीडिएटर के साथ रिजॉल्व किया जा सकता है, और शायद जो रिलेशनशिप है वो वापस से मेंटेन की जा सकती है. नाउ कन्वीनियंट ऑल्सो, दिस वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही कन्वीनियंट है. ठीक है, वाई कन्वीनियंट? बिकॉज जो पार्टीज हैं वो अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं टाइम को, लोकेशन को, दिस कैन बी डिसाइडेड बाय देम. और जो शेड्यूलिंग है वो कोर्ट के ऊपर नहीं है कि कोर्ट कब डेट देंगे, टाइम देंगे. सो दिस इज ऑल कैन बी डिसाइडेड बाय द पार्टी. Creative. Resolutions that aren't possible through arbitration or judicial determination could also be achieved. Okay? Then confidential. अब क्या मीडिएटर बोल रहा है, क्या पूरे प्रोसेस में बात हो रही है, पार्टीज के बीच क्या बात हो रही है, दिस इज पर्सनल थिंग्स, एंड वो फिर आपस में बात होती है तो फिर वो बड़ी बाहर नहीं जाती. जब कोर्ट में कोई बात होती है तो इट बिकम्स बिग थिंग. ठीक है, और ये सब ही कॉन्फिडेंशियल रखने की इसमें मांग भी की जाती है. Control. The parties control the result of the mediation, and either party has the advantage or terminating the mediation if it's felt that it's not within the interest of the said parties. So there is also this control of the parties in the process of. Okay. So with this we come to an end to this long particular news. I hope ये वाले particular analysis ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया होगा what is mediation law, what are the demands of mediation law, क्या इसके features हैं, क्या इसमें कमियां हैं. All those we have discussed in a very wide way. Now we are moving towards the next news, which is the Supreme Court has held that the center was bound to advise the president to remit the life sentence of gangster Abu Salim in 1993 Mumbai blast case on his completion of 25 years of his jail. ठीक है, तो ये न्यूज है. अब इसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं क्या है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. On the appellant completing 25 years of his sentence, the central government is bound to advise the president for the exercise of his powers under Article 72 of the Constitution.
तो जो 25 years कंप्लीट हो गए सेंटेंस के, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्चुअली बाउंड कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें ताकि वो अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करें अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम डिटेल में अभी देख रहे हैं। The central could itself consider remission on the completion of 25-year sentence in terms of section 432 and 433 of the Code of Criminal Procedure. ये सब हम डिटेल में देखेंगे कि remission, all of these things, what are they? Okay. Now, what is this pardon? This we will try to understand. A pardon is a government executive decision to allow a person to be absolved of guilty for an alleged crime or other legal offense as if the act never happened. So pardon क्या मतलब माफ कर दिया कि जो क्राइम उस बंदे ने किया है समझ लो कि शायद वो हुआ ही नहीं है। Now why is the need for pardon? Pardons can be granted when individuals are deemed to have demonstrated that they have paid their debt to society or are otherwise considered to be deserving for them. अगर लगता है कि किसी इंसान को सजा मिल गई है जितनी चाहिए थी, या फिर उसने जो गलती की थी उसको सुधार लिया है, सोसाइटी को कुछ बेहतर करके दिया है, in all those cases pardon can be given. Pardons are sometimes offered to persons who were either wrongfully convicted or who claim that they were wrongfully convicted. So pardon किन केसेस में ऑफर की जा सकती है, अगर पता चले कि किसी पर्सन को गलती से सजा मिल गई, या फिर कोई इंसान बोले कि उसको गलती से मतलब he has not done this crime but उसको punishment मिल गई, तो in those cases also this can be done. Pardons are sometimes seen as a mechanism for combating corruption, allowing a particular authority to circumvent a flawed judicial process to free someone that is seen as wrongly convicted. So जो pardon है वो कई बार एक मैकेनिज्म की तरह यूज होगी करप्शन को कम्बैट करने के लिए। पर्टिकुलर अथॉरिटी को मतलब हमारा ये माना अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि कोई गलती हो जाए जुडिशियल प्रोसेसिंग में, तो उस केस में पार्डन जो है वो इज हेल्पफुल। Now, as I told you, we will try to understand that what is Article 72. Article 72 says that the President shall have the power to grant pardons, reprise, respite, or remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offense. अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आए होंगे, डो नॉट वरी, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं। There are 5 different types of pardoning. Pardon means completely absolving the person of the crime and letting him go. The pardoned criminal will be like a normal citizen. Pardon मतलब पूरी तरीके से माफ कर दिया, अब कोई उसके ऊपर टैग नहीं है क्राइम, ठीक है, वो किसी भी नॉर्मल सिटीजन की तरह। Commutation means changing the type of punishment given to the guilty into a less harsh one. For example, death penalty commute to a life sentence. तो जो सजा मिली थी उससे कुछ कम कर देना, हार्शनेस जो है, लेवल जो है उसका वो कम कर देना। जैसे कि डेथ पेनल्टी मिली थी बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, ठीक है। देन वी हैव रिप्राइज means a delay allowed in the execution of a sentence, usually a death sentence, for a guilty person to allow him some time to apply for presidential pardon or some other legal remedies to prove his innocence or successful rehabilitation. Now, इसमें क्या होगा कि जो सजा है उसमें थोड़ा डिले कर दिया जाएगा। जैसे अगर डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा समय दिया जाएगा कि वो प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए मतलब अप्लाई कर सके, एंड जो भी लीगल रेमेडीज है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए वो उसके लिए वो सक्सेसफुली अप्लाई करने की कोशिश कर सकते। नेक्स्ट इज रिस्पाइट. दिस मीन्स रिड्यूसिंग
the quantum or degree of the punishment to a criminal in view of some special circumstances like pregnancy, mental condition. तो रिस्पाइट कब यूज होगा? जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है उसको कम करने के लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, जैसे अगर कोई वुमेन क्रिमिनल है, वो प्रेग्नेंट है, या फिर कोई क्रिमिनल है जो मेंटली साउंड नहीं है, तो फिर उस केसेस में इसको लेस किया जा सकता है. रिमिशन मीन्स changing the quantum of the punishment without changing its nature. For example, reducing 20 years rigorous imprisonment to 10 years. तो imprisonment तो था ही, जेल तो होनी थी, तो वो 20 की जगह 10 की कर दी, तो वो रिमिशन हुआ. ठीक है. So this was it. Okay. So with this, we come to an end to our daily news articles for today. And let me just quickly take you through the things that we just had in these articles. Firstly, we started that the Parliamentary Standing Committee on Justice, Law and Justice has actually recommended some changes in the mediation bill. So हमने बिल को समझने की क्या कोशिश करी, मीडिएशन बिल क्या है, ठीक है, कैसे ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में बिटवीन टू पार्टी हेल्प कर सकता है, कैसे ये जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल का बर्डन है उसको कम कर सकता है, ऑल दोस थिंग. फिर इसके की फीचर्स क्या थे, ठीक है, वो देखे हमने की फीचर्स. मीडिएटर का क्या रोल होता है, कहाँ से मीडिएटर अपॉइंट किया जा सकता है, कैसे मीडिएटर को अप्रोच किया जा सकता है, ऑल दोस थिंग. फिर जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं पार्लियामेंट्री कमिटी ने कि क्या इश्यूज है इस पर्टिकुलर बिल में, वो हमने देखे सारे. ठीक है. फिर उसके बाद कि ऐसे मीडिएशन लॉ की क्या जरूरत पड़ गई, वो हमने देखा. ठीक है. देन वी केम टू द नेक्स्ट न्यूज, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल है कि सेंट्रल को जो प्रेसिडेंट है उनको हेल्प करना है, मतलब उनको एडवाइस करना है for the sentence of life sentence of gangster Abu Salim, जो कि 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में he was convicted. ठीक है, ये न्यूज देखी. तो एससी कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा वो देखा हमने. पार्डन पावर क्या होती है वो देखी, पार्डन की क्या नीड होती है वो देखी. फिर हमने देखा आर्टिकल 72 क्या. ठीक है. फिर आर्टिकल 72 के अंदर कौन कौन से 5 तरह के पार्डनिंग पावर्स हैं वो देखे हमने. ठीक है. जिसमें पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, ये देखे हमने. नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. ठीक है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Which of the following fish species are endemic to India and also listed as critically endangered on the IUCN Red List? IUCN you already know, last classes में बताया था, International Union for Conservation of Nature. तो ये एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्टिव है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ऐसे लिस्ट बनाते हैं. ठीक है. तो ऑप्शंस आर हम्बैक महिसी, डेनिसन बर्ड, लेबियो निग्रेसन. तो 3 है आपके सामने. अब इनमें से कौन सी है ये आपको बतानी है. ठीक है. कौन सी फिश है जो एंडेमिक है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इन द लिस्ट ऑफ IUCN. So you have to choose the correct answer. Words हैं answer 1, only 1, only 1 and 2, only 2 and 3, all 1, 2 and 3. Correct answer is only 1. ठीक है. Now why only 1? Let's read the explanation to get the answer and also to understand some other important parts. The humpbacked mahseer is a large freshwater fish, also called the tiger of the water, and found only in Kaveri River Basin, including Kerala's Pambas, Kavini, and Bhavani rivers. It is now critically endangered under IUCN Red List. So this is important कि इसको टाइगर ऑफ द वाटर भी कहा जाता है. ठीक है. टाइगर ऑफ द वाटर इंपॉर्टेंट है. कहाँ कहाँ मिलता है वो भी हमने देख लिया. डेनिसन बर्ड
also called as Miss Kerala, is a native freshwater fish species commonly found in the parts of Karnataka and Kerala. It has been recently included in Schedule 1 of the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. It is endemic to Western Ghats in India. It is listed as endangered under IUCN. Okay? Labio nigrescens is a species of freshwater fish belonging to genus Labio, which is endemic to Karnataka. So that is why option 1 will be correct and others will not. Okay. So with this, we come to an end to our daily current affairs session for today. I'll meet you pretty soon tomorrow with another current affairs session. Till then, keep studying and working hard. Thank you so much and have a very